Welcome to this Wednesday's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए कार्यक्रम में आमंत्रित हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर A.K. भट्टाचार्य। भट्टाचार्य जी नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी। DNS allowance is hiked by 4% ahead of the festival season. Domestic stock indices declined by about 0.5%. Sensex closes below the 59,600 mark. Nifty settles near 16,850 level. Rupee weakens by 36 paise against the US dollar and Brent crude oil prices rise above $86.50 per barrel. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 4% की वृद्धि को मंजूरी दी। घरेलू शेयर बाजारों में करीब 1% की गिरावट। सेंसेक्स 56,600 के स्तर से नीचे हुआ बंद। निफ्टी 16,850 के करीब आया। डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ 36 पैसे कमजोर और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $86.50 प्रति बैरल के आसपास। सबसे पहली खबर केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों से जुड़ी हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 4% की वृद्धि को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में कैबिनेट की बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस पर प्रतिवर्ष 12,852 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को इस साल अक्टूबर से दिसंबर तक और 3 महीने के लिए बढ़ाने को भी स्वीकृति दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि इस पर अगले 3 महीनों में 44,762 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अब तक इस योजना के तहत लगभग 3,45,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश भर में इस योजना के लगभग 80 करोड़ लाभार्थी हैं। इसे अप्रैल 2020 से लागू किया जा रहा है। डॉक्टर भट्टाचार्य जी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि 80 करोड़ लाभार्थी इस योजना के, और कोरोना के काल में जब इस योजना को लाया गया था तो बहुत जरूरत भी थी और कल्याणकारी योजना सरकार की, कितनी महत्वपूर्ण ये डिसीजन है 3 महीने के लिए और बढ़ाया है। और साथ ही साथ एक बात यहां पर और जानना चाहेंगे आपसे कि जितना खर्च इस योजना पर हो रहा है उससे राजकोष की स्थिति पर क्या असर पड़ रहा है? दोनों जो मुद्दे आपने उठाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहली जो इशू आपने रेज की है कि फेस्टिवल सीजन आ रहा है और इलेक्शंस भी उसके बाद आएंगे और अचानक सितंबर 30 को ये खत्म होने वाला था ये स्कीम। अचानक इसको खत्म कर देने से एक जो शॉक का पैदा होने का जो डर था उसको मैं मानता हूं कि हालांकि इसकी सख्त जरूरत इस वक्त शायद नहीं है, पर क्योंकि ये शॉक कोई ट्रीटमेंट न हो इसीलिए इसको 6 महीने के बजाय पिछला जो एक्सटेंशन था वो 6 महीने का था, इसको 3 महीना एक्सटेंशन कर दिया गया। और मैं समझता हूं इसमें एक सिग्नल इम्प्लिसिट है कि पहले बार एक्सटेंशन 6 महीने हुआ, इस बार 3 महीने हुआ और शायद संकेत ये दे जा रहा है कि अगली बार शायद और एक्सटेंशन ना हो। पर राजकोषीय में तो जरूर, क्योंकि इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया था बजट में। पहला जो 6 महीने का था उसमें करीबन 81,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा हिट सरकारी खजाने में पड़ा। इस 3 महीने से करीबन 44,000 करोड़ का खजाने के ऊपर एक चोट आएगी। पर अगर आप पॉलिटिकल और इकोनॉमिक गवर्नेंस की दृष्टिकोण से देखेंगे, मैं समझता हूं कि ये जो स्टेप जो है उसी संदर्भ में लिया गया है। AKB, clearly the DNS allowance hike by 4% is an attempt to combat inflation. You spoke about provisioning for this expense by the central government. Is it from the contingency fund or is it out of the consolidated fund of India? Because the budget is
framed accordingly. Absolutely. I think the DNS allowance bit for the current year, its impact will be only around 8,500 crore because it is starting from July 1. So 12,500 crore is the annual impact, which means that it will be added to the next financial year's annual bill. But for the current year, the additional hit will be around 8,500 crore because only 8 months the government will have to bear the cost. Now, even there, this is on a budget size of over 37 lakh crore. This is a small amount in my view. It can be absorbed very easily. It is not as large as the free food ration scheme. So effectively, it's a rolling budget. It's actually, in that sense, 8,500 crore can be absorbed in many ways. And if I remember correctly, when the finance ministry prepares his budget, this DA allowances and increases are by and large built into the overall calculation of these numbers. So from the fiscal point of view, I am not at all worried about the adverse impact of this. But remember, there are about 3.9 million government employees and there are about 7.8 million pensioners. So take a load of total around 11 million people who will be positively impacted before the festival season with getting an arrear from July, and they will get their DNS allowance, and pensioners will get their DNS relief, and the employees will get DNS allowance. So it's also creating a feel-good factor at a time when inflation is rearing its ugly head, at a time when recession fears are haunting the globe. Consumption. That's right. Yeah. Let's move on to our next story. The Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India, headed by the Governor, Sri Shaktikanta Das, began its deliberations. The decision of the rate-setting panel would be announced on Friday. The central bank may take cues from its global counterparts, including the U.S. Federal Reserve, to raise interest rates for the fourth time in a row to tame a stubborn inflation. RBI, which has since the month of May raised the short-term lending rate, the repo rate, by 140 basis points, is likely to go for a 50 basis point increase to take it to a 3-year high of 5.9%. The central bank had raised the repo rate by 40 basis points in May and 50 basis points each in June and August. The present rate is 5.4%. Clearly a lot of figures for our listeners to grapple with. What does this mean for the bank rate, lending rate, and the likely decision by the Monetary Policy Committee? There was a dissent, I believe, earlier not to raise it by too much, but the government has to combat inflation. What is the likely rate hike and the impact really on consumption? Well, as you rightly pointed out, Mr. Chaudhary, that the rate hike most probably will be in the range of 35 to 50 basis points. I don't think there is any surprise element there. This is probably needed given the fact that Fed Reserve and the many other central banks in the world raised their rates last week. So I don't think the RBI has any wiggle room to get out of a situation by not raising the rates. Rates will be raised. The question is whether it will be 35 basis points, 40 basis points, or 50 basis points. And as you rightly pointed out, that so far there has been 3 rate increases, 40 basis points in May, 50 basis points in June, and 50 basis points in July. Now, the question that I think the investors, retail market participants will have to look forward to and try to understand is, what does the Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee say about the future? And the future the indication will be available from 2 of its new numbers, which is one is what kind of inflation projections it makes for the next 6 months, next 12 months. That's very, very key. And remember that globally you're talking about recession. Now, when there's a recession globally, will inflation continue to rise at the same rate as in the past? And the second point is, the Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee has to come out with what the growth prospects looking like, because in the past their growth projections have gone little wrong.
They talked about a 16.2% growth in the first quarter, but the actual numbers came to only around 13.5%. They talked about the full year 7.2% growth. So whether they will stick to the 7.2% growth or they will revise it downwards or upwards is something that the retail investors, the stock market participants, and the ordinary people would be very, very keen looking forward to. As far the rate increase is concerned, this is almost a foregone conclusion. AKB, our listeners do understand that for the month of August, the CPI was at 7%, but there is also a very strong dollar to the rupee in the exchange rate because the dollar index is right now touching 115. So there's a lot of imported inflation into the country, especially when it comes to fuel and other materials that come to our shores. How do you see the central bank combating that? Because there is not only the repo rate that the central bank controls, but also the exchange rate to some extent through intervention. How do you see them grappling with both of this, both the foreign exchange side and the repo rate side? I think they will have to take a nuanced call on this. On the one hand, yes, you are right, that the rupee has depreciated by around 9% in the current year. This has certainly raised the dangers of imported inflation, as you rightly pointed out. It's 81.91 right now. Absolutely. It's 9%. If you look at the current year, if you look at it from April, the depreciation is only 9%. Now, at the same time, the crude oil prices, international crude oil prices are coming down. So if they are coming down, what will be the impact of a 9% depreciation or a 10% depreciation in the backdrop of a crude oil price which is falling? So the Reserve Bank Government as Monetary Policy Committee, I'm 100% sure that in these 3 days will wrestle with these numbers, that what will be the impact of inflation and what will be the impact of rupee depreciation on inflation in light of what is going to be the trend and trajectory of crude oil prices going forward. Well, we are wrestling with the exchange rate as well. It's 81.94 in fact against the US dollar. जी, और अब रुक करते हैं शेयर बाजारों का। वैश्विक शेयर बाजारों में कमजोरी से घरेलू शेयर बाजारों में भी आज गिरावट रही। सेंसेक्स और निफ्टी भी करीब 1% के नुकसान में रहे। सेंसेक्स 56,600 के स्तर से नीचे बंद हुआ, जबकि निफ्टी 16,850 के करीब आ गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.89% के नुकसान से 510 अंक लुढ़ककर 56,598 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.87% के नुकसान से 150 अंक टूटकर 16,859 पर आ गया। व्यापक बाजार में भी गिरावट रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.5% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.43% के नुकसान में रहे। Sensex and Nifty today witnessed losses of around 1%. Both stock indices lost in sync with losses also in the global share markets. Sensex closed below the 56,600 mark, while Nifty settled near 16,850 level. Sensex declined by 510 points, or 0.89%, to finish at 56,598. Nifty also plunged by 150 points, or 0.87%, to end at 16,859. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index ended 0.5% down, and the small-cap index declined by 0.4%. In the Sensex pack, 12 companies posted gains, while 18 logged losses. Asian Paints gained by 2.9%, Sun Pharma climbed 2.4%, and Dr. Reddy's Laboratories surged by 2%. On the other hand, ITC tumbled by 3%, Axis Bank plunged 2.8%, and Reliance Industries ended 2.6% down. In sectoral indices at the BSE, 5 sectors gained, while 14 logged losses. Healthcare gained 0.5%. IT and tech, both sectors surged by 0.3% each. On the other side, metal sector declined by 2.3%. BankX lost 1.5%, and finance declined by 1.3%. The overall breadth of the BSE trade was negative, as shares of 1,277 companies gained, while 2,161 companies fell. Shares of 94 companies remained unchanged.
और रुपए के प्रदर्शन पर नजर डालें तो अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 36 पैसे कमजोर होकर डॉलर के मुकाबले 81 रुपए 94 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स करीब आधा प्रतिशत बढ़कर 114.63 पर कारोबार कर रहा था। भट्टाचार्य जी, आज लगातार छठे दिन शेयर बाजार में गिरावट, क्या कहेंगे? मार्केट में तो हलचल तो है ही, और अगर आप अगर विश्व की ओर देखेंगे तो जो रिसेशन का जो एक साया छाया हुआ है, उसको देख के लगता है कि ये जो वॉलेटिलिटी और स्टॉक मार्केट में जो हलचल मच रही है वो स्वाभाविक है। और स्टॉक मार्केट जो पिछले 6 दिन पहले जो जिस तरह से स्टॉक मार्केट में बढ़ोतरी आई थी, उसमें हमारी जो इंडियन स्टॉक मार्केट जो हैं उनकी जो जिसे हम कहेंगे कितनी एक्सपेंसिव हो गई थी, काफी एक्सपेंसिव हो गई थी। मैं समझता हूं इसमें एक रियलिटी चेक भी हो रहा है। पर उसके साथ साथ मैं समझूंगा कि अगले 2-3 दिन में स्टॉक मार्केट काफी सब्सटैंटिवली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अप्रोच को देख के अपना रुख तय करेगा। तो आज की तारीख में ब्रॉड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड डिक्लाइन हुआ है। कोई सेक्टर बहुत सिग्निफिकेंट कोई गेन आया नहीं है। 2-3 सेक्टर में आए हैं, पर ज्यादातर में डिक्लाइन ही हुआ है मोस्टली। जैसे मैंने कहा कि जो ग्लोबल डेवलपमेंट जो है, रिसेशन का जो एक डर जो है, वो सारे मार्केट को इस तरफ स्पूक कर गया। AKB, the fear factor, the volatility index is at 22. You mentioned about the Monetary Policy Committee of the Central Bank will announce its decision on Friday. So how do you see the markets tomorrow? In fact, especially with 6 days of consecutive declines, they're calling it a bear market. Will there be a bear squeeze, or do you see the market correcting maybe upwards? My sense is that the markets will still try to grapple with and assess what kind of new factors may emerge in the coming days, and so therefore, if you have noticed the trend in the stock market in the last 2 days at least, that there have been serious setbacks during the trading sessions, and then there is some sort of a recovery to end the day with not that steep a decline. So there is a lot of foreign investors are pulling their money out, whereas the domestic investors are still pretty hopeful of some value or some juice, as they say, still lying in the market. So I think there are 2 critical factors that will determine the medium to long-term trajectory of the stock market. One is what kind of guidance the Reserve Bank of India gives on the kind of monetary policy stance that it will reveal on Friday. The second would be what is its inflation projection, and the third is how does it see the growth scenario. So all these things will actually help the stock market to decide, so to say, what kind of trajectory it should adopt. जी, भट्टाचार्य जी, एमपीसी की बैठक में जाहिर सी बात है रुपया जिस तरीके से रिकॉर्ड लो स्तर पर इस समय चल रहा है डॉलर के मुकाबले, हालांकि विश्व की जो और प्रमुख मुद्राएं हैं उनकी तुलना में कम गिरावट है काफी रुपए में, लेकिन फिर भी जिस तरीके से गिरावट है, आरबीआई के सामने, रिजर्व बैंक के सामने क्या रास्ते बचते हैं कि वो, हालांकि रिजर्व बैंक ने रुपए को थामने के लिए कुछ डॉलर जरूर मार्केट में पंप इन किए, लेकिन क्या एक यही मात्र रास्ता है या कुछ और भी विकल्प बचते हैं आरबीआई के सामने कि रुपए को किस तरीके से थामा जाए? देखिए, जो रिजर्व बैंक इंडिया के पास जो अस्त्र जो है, वो अस्त्र को बहुत समझ के, सूझबूझ के साथ उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो चीज हमने पिछले कई हफ्तों में देखी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपना जो चीफ वेपन जो है वो फॉरेक्स रिजर्व्स है, वो करीबन $80 बिलियन का इस्तेमाल किया है। अगर आप पूरे सितंबर से देखेंगे
तो करीबन $100 बिलियन का जो रिजर्व्स में कमी आई है। तो उसमें से $80 बिलियन का इस्तेमाल तो रुपए को संभालने के लिए हुआ है। अगर $80 बिलियन का इस्तेमाल नहीं होता, शायद रुपया और भी वॉलेटाइल होकर शार्प उसमें और भी नीचे गिर सकता था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने जो रिजर्व से एक चीज तो जरूर करके ये दिखाया है कि जो वॉलेटिलिटी जो है वो मैनेजेबल लेवल में ला सके हैं। पिछले 2-3 दिनों से हम ये देख रहे हैं कि रुपया 80 के ऊपर अटका हुआ था, अचानक वो 81 और करीबन 82 की तरफ भाग रहा है। मेरा असेसमेंट ये है कि ये एक हर करेंसी एडजस्टमेंट में पड़ाव होता है। ये एक ऐसा पड़ाव है जहां पे रुपया अपनी नई एक सीमा में आकर स्टेबलाइज करेगा। वो शायद 82 के करीब होगा और वही हम इस वक्त देख रहे हैं। मैं ये नहीं समझता कि रुपए की जो मूवमेंट है उसको रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सरकार को भी कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है जिससे कि रुपए की जो डिक्लाइन को रोका जा सकते। ये एक मार्केट मैकेनिक्स है और मार्केट मैकेनिक्स को वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए जो करना है रिजर्व का इस्तेमाल किया गया है और वही एक काम्य और ऑप्टिमम अप्रोच रहना चाहिए। Well, the declining rupee at 81.94 certainly benefited the IT index, which was in the green today, marginally by 0.24%. There's also value investing in this particular sector. What would you advise investors at this point? Should they enter into trade or should they just buy on dips or sell on rise? What's the advice? Well, in my view, that they should not look at the broad indices. They should look at not even the sectors. They should look at specific companies. That's number one. Number two, as you pointed out, that the depreciating rupee is actually an opportunity for companies that are well entrenched in the export market. The IT sector has gained largely because of that. But remember that the global recession, the fears of recession is also going to neutralize some of the advantages which our export sector could have had if rupee had really depreciated without any recessionary fears. So one has to look at it a little cautiously and take a calculated call. जी, नजर डालते हैं वैश्विक शेयर बाजारों पर। वैश्विक मंदी की आशंका और बढ़ती ऋण लागत के चलते एशियाई बाजार आज लुढ़क गए। हांगकांग का हैंगसेंग 3.4% टूट गया। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 2.45% की गिरावट रही। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.6% फिसल। जापान का निकेई 0.5% नुकसान में रहा। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 1.5% के नुकसान के साथ बंद हुआ। अंतर्दिवसीय कारोबार में यूरोपीय शेयर बाजारों में भी गिरावट का रुख था। जर्मनी का डेक्स और फ्रांस का कैक 1% की गिरावट में रहे, जबकि लंदन के FTSE 100 में 0.4% की गिरावट चल रही थी। Moving on to the U.S. stock market, the S&P 500 and the Dow Jones Industrial Average ended marginally lower yesterday, while the Nasdaq witnessed gains. The Dow Jones index fell by 0.4%, the S&P 500 declined by 0.2%, while the Nasdaq Composite Index climbed by 0.2%. So just like the IT index we spoke about, which rose marginally in today's trade, Nasdaq has gone up by 27 points only. Why is it that in the U.S., IT and IT-based companies are doing better than those companies listed on the Dow Jones Industrial Average? Well, I think what we are seeing is that the IT industry had to withstand the adverse impact of the post-COVID situation, where during the COVID time the IT industry was seen to be growing at a certain pace, and that pace probably may not be maintained. So I think the IT stocks are coming to terms with that new reality of a post-COVID world, where their growth rates will have to stabilize at a certain different level. The second point, I think broadly the American markets are actually also looking forward to what the Fed Chairman, Jerome Powell, will say at a bank research program meeting tomorrow. There's a lot of expectation that he might provide some further guidance, and there is both hope and as well as some apprehension that what
next he might indicate in terms of the Fed's approach or stance in the days to come. So while the equity markets have been taking a beating, the bond market, especially the government treasury bills, notes and bonds, if you look at the 1 year, 2 year and the 5-year yields, they've crossed 4%, and governments, sovereign entities are invested in these US treasuries. So how do you see that offsetting whatever expenses they have, or they're running a fiscal deficit in their own national economies? Well, in a sense that there is a relative lack of interest in the U.S. treasuries right now, and that is to some extent responsible for what is happening to the U.S. bond market. What this might lead to is something time will tell. But what is important is that the global allocations of the bond, the money that goes into the different bond markets is also going to see some change. As you would know that the global bond indices are going to see the exit of Russia, and probably India might join that index, and which is also why that the Indian bond markets are seeing yields falling a little bit and the prices going up. Well, let's have a look at the oil market now. Oil prices are broadly stable today as pressure from a strengthening dollar and crude storage builds was offset by U.S. production cuts caused by Hurricane Ian. Brent crude was trading at $86.50 per barrel, while WTI crude prices were at $78.95 per barrel. Once again, oil prices are going up marginally according to the data from the New York Mercantile Exchange. In fact, it's gone up by 1.38%. So it's hitting almost $80 as far as WTI crude is concerned. Do you see the prices being range bound at these levels, or do you see them go up because oil producing countries see to the advantage if oil prices in fact had remained at $100 per barrel, unlike emerging economies? Let me say that if there was no Russia-Ukraine conflict right now, the prices would have fallen further because of the recession and the trade going down. And what is happening right now, if they are holding on to these levels, is largely because of this conflict that is going on, and there is no sign of that conflict going to the next level or finding a resolution. So my reading is that the oil prices will remain range bound at these levels, but the moment as someday when this conflict finds a resolution of sorts, you will see the oil prices go down further, and that, as many people believe, will be good news for India. बात करते हैं कीमती धातुओं की। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर के वायदा कारोबार में सोना 80 रुपए बढ़कर 49,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 180 रुपए टूटकर 55,200 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना $1,637.40 प्रति औंस पर था। चांदी $18.16 प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रही थी। भट्टाचार्य जी, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कि मंदी की इस आशंकाओं के बीच में अगले 2 से 3 महीनों में सोना में आप क्या देखते हैं कि बढ़त रहेगी या और अभी सोने की कीमतें? जब तक डॉलर इंडेक्स बढ़ता जाएगा, मैं समझता हूं सोना डिप्रेस्ड रहेगा रिलेटिवली, क्योंकि दोनों का एक कोरिलेशन है। तो अगर डॉलर इंडेक्स में अगर नरमी आई तो मैं समझूंगा कि गोल्ड के प्राइस के बढ़ने के आभास मिलेंगे, पर तब तक जो करंट सिचुएशन है वही बरकरार रहेगी। ए.के. भट्टाचार्य जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और इतनी बहुउपयोगी चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। And before we close, a reminder of the headlines. Dearness allowance hiked by 4% ahead of the festival season. Domestic stock indices declined by about 0.5%. Sensex closes below the 59,600 mark. Nifty settles near 16,850 level. Rupee weakens by 36 paise against the US dollar. And Brent crude oil prices rise above $86.50 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Namaskar.